Now we have rule number 7 and rule number 8. In rule number 7, words like nothing, anything, everything, something. If these words are there in the particular sentence, then the question tag will have it, it in the end after this verb, auxiliary verb. Everything is clear, isn't it? Nothing can help me, can it? So this it has to be taken care of. Everything, nothing. So we have used it here. Rule number 8. Never, nobody, hardly, scarcely, few, little, rarely, etc. ये सारे सब शब्द है, इनका ये एक्चुअली नेगेटिव वर्ड्स है. हार्डली नेगेटिव मीनिंग बताता है, स्कैर्सली नेगेटिव मीनिंग बताता है, बट ये एक नेगेटिव वर्ड जैसा नहीं दिखता. नेवर और नोबडी दिखता है, लेकिन हार्डली, स्कैर्सली, लिटिल, रेयरली, दीज वर्ड्स, ये सब शब्द जो है ये नेगेटिव नहीं दिखते, लेकिन एक्चुअली है वो नेगेटिव वर्ड्स. तो जो हमारा रेगुलर रूल है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, वही सेम यहाँ हम फॉलो करते हैं. सो द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. एग्जाम्पल, ही हार्डली came here. Did he? This particular sentence is positive. It looks positive. Question tag is positive. But because of this word hardly, ये जो वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है, इसके लिए उसका जो क्वेश्चन टैग है वो अफॉर्मेटिव हो जाएगा. Did he? He hardly came here. Did he? Then we have the rule number 9. मून, अर्थ, रिवर, कंट्री, मदरलैंड, शिप, ट्रेन, एट्सेट्रा, ये सारे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे तो इनका जो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा दैट विल बी शी. उसका रीज़न ये है, मून, अर्थ, रिवर, कंट्री, मदरलैंड, शिप, ट्रेन, ये सबको है ना फेमिनाइन जेंडर कंसिडर किया जाता है. इसके लिए जो प्रोनाउन होगा दैट विल बी शी, नॉट ही, नॉट इट. It will be always she. Example है, India has never attacked any country. India is a country, definitely. India has never attacked any country. Hasn't, has है तो hasn't. She. Why she? Because India is considered or given a feminine gender. Rule number 10. Sentences beginning with I am. ये बहुत important है. I am. तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आंट आई होगा, ना कि एमंट आई. एमंट आई जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. स्टूडेंट्स मोस्टली गेट कंफ्यूज्ड इन सेंटेंसेस हैविंग आई एम. एग्जाम्पल ये रहा, आई एम कॉन्फिडेंट, आंट आई. आई एम कॉन्फिडेंट, एम आई विल ऑल्सो बी रॉन्ग. आई एम कॉन्फिडेंट, एमंट आई विल ऑल्सो बी रॉन्ग. दिस इज द करेक्ट आंसर. आई एम कॉन्फिडेंट, aren't I? Guys, thanks for watching this video. I hope आपके सारे जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे डेफिनेटली. क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट लुक्स वेरी सिंपल. देख के बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर इन डेप्थ जाए तो दैट बिकम्स अ बिट ट्रिकी. तो मैंने सारे जो बेसिक डाउट्स है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की. In the end, I would just like to request you all to subscribe this channel, the PM Tutorials. Share it as much as possible to your friends, relatives, juniors, seniors, teachers, students, and please press the bell icon to get the regular updates from our YouTube channel. Thanks and goodbye.